In this lesson, we are going to discuss what loop structures are. What are loop structures, or you can say iterations. You can also say as an iterations, or you can also say repetitions. Okay? Any statement which is repeated again and again is a loop. Like suppose I say I have to display a message that is computer science. Now this message needs to be displayed 20 times on my screen. When you are working with 20 times, what is the best thing? Just output it again and again. Computer science, computer science, computer science, output again and again. हो सकता है ना? Yes, sir. But what happens when we work with a programming concept? We generate two files. One is your developer file, or you can say your code file, or you also can say as a source file. This is also known as a source file in which you work with your programming. Now I have written this statement 20 times on my screen. This statement, output computer science, computer science, computer science. When I execute it, compile it, or you can say compile it, it will generate it's an exe file and it will go to its RAM. और आपका जो भी result होगा, it will going to display on it. Computer science is going to be output computer science. Again, how many times? 20 times. Right? What happens in the memory? According to ASCII, we have discussed this. ASCII, what is ASCII? Every character has a binary value, and each has as the binary value takes around about 1 byte. Okay, 1 byte is equal to what you can say 8 bits. Different programming languages take 4 bytes भी लेते हैं. It takes 16 bytes भी लेते हैं according to ASCII, yeah, or you can say Unicode, or इनके accordingly वो ले रहे होते हैं. But let's assume it is taking a 1 byte, 1 character. How many characters are there in this one line? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, almost 21. 21 characters. So one line is taking 21 characters. That means 21 bytes. And I have 20 lines, right? 21. If you multiply with this, so this is 2, like it is 420 bytes, just to represent computer science 20 times on the screen. And in your RAM, it was also taking that space. Okay, so आप जब इसको compile करोगे, execute करोगे, it is going to take a lot of space in your RAM when it's going to execute this file. So memory storage भी आपकी बढ़ रही है file की, memory storage is getting increased, और ये भी आपकी RAM में भी access आपका बढ़ रहा है. हो रहा है ना? So according to efficient programming, हमें किसी चीज को बार-बार repetition करनी है, we use loop structure. Now in loop, we have 4 different types. One is a for loop. Second is a repeat, until loop, and last one is a while, do, and while loop. Now, with the definition of loop structure, loop enables sections of a code to repeat as required. They can be constructed in different ways to meet the requirement of an algorithm. Now, for next is also known as a count control. There is another loop, repeat until, that is known as a post condition. While, do, and while, that is known as a precondition loop. First, count control loop, or you can say a for next loop. In pseudocode, a count control loop is written as for, then the variable name, and the starting value, to, and value. And the step, if it's incrementing or decrementing, and the last, next. For, to, next is the main pseudocode of it. For, to, next. Just like if, then, else, if we have done in that case of end case. Yeah, for, to, next. Inside for, to,
you have to give a variable which is going to count how many times this statement inside this for next has been executed. So वो counting कर रहा होता है. So computer को हर चीज information देनी होती है. We have to give every information to the computer. Otherwise he's not going to. It's not a human जो के memorize कर लेगा. हमें उसे उसकी memory में हर चीज store करवानी. Now the control values start with the value s, increments by value I each time round the loop, and finishes when the control variable reaches the value e. Now this e, how it's going to work? The main requirement are four. There are four main requirements to work with the loop structure. If it's a for, repeat, or until. For, repeat, and while. Whatever loop you are using, the four requirements are mandatory. First one is a variable. Variable to count how many repetitions are done. Okay, that's the first one. Second, and initial value. Or you can say a starting value. So suppose I have a variable that is a count, and there are few statements, and that needs to be repeated 20 times. Now my counter will start, or you say count or counter will start from 1. And how many times it's going to execute? 20 times. So my ending value is what? Your final value, or you can say your ending value, right? That is 20. So it's going to compare the values again and again in this variable, how many times this loop has been executed, and an increment, or you can say decrement value. Increment क्या होता है? Suppose अभी ये 1 से start हुआ है, which is starting from 1, and we have to go till 20. So 1 के बाद 2 आएगा, 3, 4, and it is incrementing of 1. एक का प्लस हो रहा है ना, 1 से फिर वो 2 पे जाएगा, 3, then 4 and 5, 6 and up to 20. So एक का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, इसमें भी एक का इंक्रीमेंट. So that is required. और अगर हम रिवर्स चल रहे हैं 20, 19 till 1, so it is getting decremented of 1, 19 के बाद 18 and so on. So you need a decrement statement. Now these four things are mandatory, right? Variable, initial value, final value, and increment. This for loop is doing the same thing. This is your variable, assigning s your initial value to e your final value. Okay? Step, that is your increment. We mostly use this step for decrement. हमें decrement करना हो तो फिर हम use करते हैं. Otherwise, अगर increment कर रहे हैं तो we are not going to use it. It's an optional. Here in next, it is automatically incrementing +1. यहाँ पे automatically increment हो रहा होता है आपके variable में. अगर variable में 1 है तो वो +1 करके 2 कर देगा. So जैसे ही आपकी लूप के अंदर ये एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स करेगा या स्टेटमेंट करेगा, वो नेक्स्ट पे आके आपकी जो वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है उसको 1 का इंक्रीमेंट कर देगा. ठीक है, एंड इट विल गो बैक टू द लूप and it's going to see the final value. Is the final value is the same value in the variable? अगर है तो आपका लास्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा और नेक्स्ट पे आके टर्मिनेट कर देगा. It's going to terminate the loop. Otherwise, अगर नहीं तो वो इनिशियल वैल्यू देखेगा, अभी मेरी ये चल रही है, फाइनल वैल्यू के कंपैरिजन नहीं है, वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, दोबारा फॉर लूप में आ जाएगा. Correct? In Python, we use for in small letters, then the variable name, in range we are going to write, s is your initial value, e
is your final value and I is for increment, अगर आपने increment का करना है, ठीक है? और inside you have to write your statement. Indentation is going to do it automatically and there is no next. हम यहाँ पे next use नहीं करते, so we don't need it. In VB 4, then variable equal initial value to final value and increment if required. Otherwise, next may automatically increment. There are few examples when we are working with for loop. Remember one thing, for loop is your count control loop. That also means fixed number of repetition. Where you have to go with fixed number of repetition, आप इसी को use करोगे for to next को. कहते हैं 20 times करना है if you want to execute the code or algorithm 20 times, 10 times, 20 times. So कोई भी limitations if there is a set number of repetition. So best to use a for loop. 5 times repeat करना है, right? 14 times करना है. So this example is of increment. This is your increment. We use a variable x, starting value is 1 and finishing value is 5. So output x, so x क्या कर रहा है, output कर रहा है. So अभी x में क्या पड़ा हुआ है, initially जब आप first time output करो x करोगे तो x में क्या पड़ा हुआ है, in your x variable it is as 1. जैसे ही ये program it's going to start with 4. So x will be assigned as 1. And it go inside the loop and output. So output result में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा. So x में क्या पड़ा हुआ है, 1 आ जाएगा, right? It will go to next and next x. X means it is incrementing this by 1 automatically. So यहाँ पे अगर 1 पड़ा हुआ था x में, अब क्या हो गया? It got 2. 1 plus 1. It has 2. So now x has 2. It will go back to the loop, check that final value, is it equal to this, your final value? No, it is still less. It will go inside the loop, output x again. So it will output 2. Now it has 2. Go to next, increment it again. So 2 was the previous value plus 1. It will have 3 in x. It will store 3. It will check again with the final value, it's still less. Go back to the loop, output, that is 3. Again increment, so 3 plus 1, it will have 4. So in your inside loop is 4 and output again it has 4. Next, increment again. Now it will become 4 plus 1, it will become 5 and x variable have 5 in it. It will go back again. Now 5 is equal to 5. Now that means it's the last time I have to output. It got equal, 5 equal 5. So it's the last time I have to output this. So 5, go to next. Now 5 plus 1 becomes 6. In your x variable, it will store 6 and check again. Now 5, now you got 6 in your x. So 6 is not equal to 5. It is greater than 5. So it will terminate the loop. Right? So in output, you will see that the x was getting incremented 1, 2, 3 up to 5. अब मुझे यहाँ पे बार बार स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब यही चीज let's do with the first example we did. 5 times और 20 times मुझे आउटपुट करना है. ठीक है, कंप्यूटर साइंस उसी एग्जांपल को लेते हैं एंड सी व्हाट मेमोरी डज. मेमोरी के बैकएंड में क्या होता है, राइट? सो हम उसी कोड को लेना. नाउ दिस इज आउटपुट. लेट्स टेक दिस एज कंप्यूटर साइंस, राइट? नाउ दिस स्टेटमेंट was just of 21 characters. 21 characters थे, right? Now हमें कितने टाइम्स इसे रिप्रेजेंट करना है? 20 टाइम्स. सो 1 2 कहां तक जाना चाहिए? 20. नाउ दिस वाज ऑफ 21 कैरेक्टर्स. 20 टाइम्स करना था, 20 कैरेक्टर्स बन रहे थे. सो इट वाज टेकिंग 420 बाइट्स इन द प्रीवियस एग्जांपल. अगर हम सिंपल आउटपुट कर दें,
Now this complete algorithm is taking how many characters? So it was 21 characters for this line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 for this line. 1, 2, 3, 4. 4, 4. 4 and 5. 5 for this line. So how many characters? 31 and 36. 36 characters. 36 characters. 20 times we are representing it. So 36 bytes. Now repeat loop structure. What did it do? It reduces your file size. अगर आपने 20 times वैसे output करके करना था 420 bytes ले रहा था. Here now this structure is giving you 36 bytes. So आपकी processor speed will increase. ठीक है? Processing speed आपकी increase रहेगी. जल्दी और processing करेगा आपके system को. Right? Got this? sir. The concept of how structure is working and at the back end how memory is working. ठीक है? Yes, sir. और आपकी file storage को how it is getting lesser size of file and the higher speed processing is it. Now this is done. Let's do an increment and say that if I have to start, the initial value is x is starting from 2 से start करना है and 14 तक जाना है. But the increment is of 3. 2 के बाद step 3 means कि आपकी जो previous value उसमें हमने +3 कर देना है. So 2 was the first, +3 it become 5. So x में अब क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है. ठीक है? So output क्या हो रहा है? 5 हो रहा है. फिर दोबारा लूप में जा रहा है. लूप में जाने के बाद it is again incrementing it by 3, so it becomes 8. So अब क्या पड़ा हुआ है? 8 पड़ा हुआ है. Right? So again it incremented by 3, 8, it becomes 11. So now your x variable have 11. So again increment by 3, it become 14. Now it becomes 14. So the last time it's going to output and terminate the loop. ठीक है? So output result क्या होगा? 2, 5, 8, 11 and 14. If we want to decrement, अगर मैं कहता हूं मैं 5 से start करना है, so my x variable is starting from 5. It is the decrement statement. तो हम step क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. So decrement में हम क्या करते हैं? It is starting from 5. Decrement of -1. So I'll get 4. So next will be in this variable will be 4. Then again it is going to decrement 1, 3, -1, 2. Then it will store 2. Then again -1, 1. It will store 1 in it. And that final value was still 1. So after that it's not going to decrement and terminate the loop. Right? इसका decrement हम -2 भी कर सकते हैं. So -2 हो जाएगा तो what will happen? So it will have 3 inside it. ठीक है? So मेरा यहाँ 3 आ जाएगा. Again -2 हो जाएगा. So 3 - 2, I'll have 1. So 1 आ जाएगा. So यहाँ पे ये statements फिर दोबारा execute नहीं होंगी क्योंकि हमने कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है. And after that it's going to terminate. Correct? Yes, sir. और if we go with Python, अगर हम Python में इसको execute करें, so Python में हम सिर्फ 5 times करना है, सिर्फ 5 times हम output करवा दें. So let's do this in Python. Let's take a meaningful variable name, that is a counter. Don't take it, counter. And in range, pseudocode में हम क्या करेंगे? 4 counter 2, assign and 2. ठीक है? So colon sign, enter, and I'm going to print. Let's do the same example जो हमने पहले की है. Computer size. ठीक है? Let's save this. And this is this one for. And how many times I have to loop this? 5 times. So save, compile. So it is showing me 5 times the output. Okay. So अगर यहाँ पे हम variable भी लिख देते हैं, counter, comma, so it is going to give me the counting of it.
See 0 1 2 2 3 4. अच्छा, यहाँ पे अब आप एक चीज देखो, when we started just with the final value, हमें सिर्फ final value 5 दिया था, तो it is starting from 1 0 0 1 2 right till 4 0 to 4 Okay. there are 5 right. Now if I have to start with 1 comma, how many times? 4 times. 5. So it is going to start with 1 till 4. Now in Python, the final value is not 5. हमने 5 दफा करना है तो हमें 6 तक करना होगा, 1 to 6, राइट. पाइथन में ये करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन आउटपुट आपको कितने टाइम दे रहा है? 5 टाइम्स ही देगा. लेकिन सूडो कोड में हम इसी तरह करेंगे, 4 1 to 5, तो वो 5 टाइम ही करेगा. 0 अगर 5 टाइम करना है, 0 to 4 तक करेंगे, राइट. अगर इंक्रीमेंट करना है, सो इंक्रीमेंट ऑफ 2 करना है, सो लेट्स टेक इट ऑफ 2. हम यहाँ पे इसे 10 11 करते हैं, 10 टाइम्स करना है, सो लेट्स टेक इन दिस 1 3 5 7 9. ठीक है, राइट, गॉट इट. If we Yes, want to sir. decrement it, let's say 11 to 1 और decrement, अब decrement करना है तो फिर मुझे -1 करना पड़ेगा. ठीक है, 11 10 9 8 and so on. करेक्ट. ठीक है, इसी तरह वी कैन गो विद द करेक्टर्स. कोई लिस्ट अगर हमें चाहिए तो एक्स के अंदर ए बी सी हम लिख सकते हैं, लिस्ट भी लिख सकते हैं, टू गिव इट अ लिस्ट. तो इन लिस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं. ये जो कोड है ये सिर्फ पाइथन के लिए होता है, सूडो कोड में हमें जरूरत नहीं पड़ती. काउंटर इन आएगा, नॉट इन रेंज. ठीक है, ओके, सेव F5. सो ए बी सी काउंटर, और ये आपके पास. ठीक है, सो यू नीड अ लिस्ट. अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप ए बी सी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन लिखेंगे, नॉट इन रेंज. इन रेंज अगर वैल्यूज है तो उसके लिए. सो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके पास लिस्ट आउटपुट हो जाएगी 7. ठीक है, ए बी सी जो भी आपने लिस्ट दी हुई है. सो फॉर लूप फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशन इज डन लाइक दिस. नाउ देयर इज एन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट करते हैं. नाउ दिस असाइनमेंट इज ऑफ अ टेबल. नाउ टेबल इज लाइक व्हाट? आई नीड यू to enter a table number. Suppose I enter 2. It's going to give me an output of a complete table till 10. 2 by 1 is equal to 2. 2 by 2 is equal to 4. 2 by 3 is equal to 5. Till 2 by 10 is equal to 20. Right? So enter a table name and give a result output like this. If you go with the pseudocode of the table, it's very easy that we should enter first this input, enter table number, and comma just have an variable with the name of table, and declare table colon integer. Now we have to display a table if any, and table number 2. If you're entering a table number 2, so your table will start from 1 multiple till 2 multiples of 10 and give you the result, right? That's your output result. So if you enter a table, whatever table is, we are using a for loop, and according to for loop we need a counter which will start from initial 1 and to how many multiples? 10 multiples. So up to 1 to 10 multiples, so we require it. And here we need a next counter which will increment the variable 1. So if you enter a table number, after entering a table, we have to output the result first. See, this 2 is constant. The 2 is here in this variable table. So we will need to be output as a variable. Now x is also constant, and it's a text, it's a string. So x, and then
there is 1 which is changing till 10, and it can be your counter variable, which is all at every loop of the statement, it is getting changed from starting 1 to 10. And then we need an output, which is this equal sign. This is also constant, equal as a string. So we can represent this, and comma, last one is your answer result. So we can do two things. One, we can write table multiply by the counter, right? So if it is 2, it is going to multiply by first counter, the first loop, it is going to give you a result 2, right? So answer is 2. So it is going to represent 2 over here. Then if again the counter will change, so 2 multiplied by 2, it's going to be 4. Or you can directly do one other thing. Take another variable, answer, and counter multiply by the table, or table multiply by the counter. And you can directly write answer here. Now answer also need to be declared. So let's take comma as answer and colon as integer type. So both can be represented. So at the end, output result will be this 2. If I enter 2 in this variable, so 2x, this counter, the first initial, if the loop starts, will be 1, then equal the answer. Answer is here, which is 1 multiplied by 2 is 2. So 2. Next, if counter changes, it will become 2 multiplied by 2. The answer will show you. This is the result, which is going to be represented one after another after 2 multiplied by 10, which is going to be 20. Now, if we go with the presentation and code of it, so let's take a variable that's a table, input it, and input. Now, let's take it and table number, right? So this is your table number, which is need to be input. Now, it's by default it's a string type. We have to take it as an integer type, and then 4 will start as a counter in range. It will start from 1 to 10 times. So we have to repeat it. So 10. So we'll say that 11. So it will terminate before 10. Now let's take another variable, answer, which is going to be table static counter. So table, whatever the value is, multiply by the counter, and also output the result. So first is table, comma, x. Then we have counter, so the counter value of it, and comma. Then we have equal sign, and then comma, answer. Right? So if we save this and execute the file, this is going to ask you to enter the table and go to the for loop, and it will repeat the 1 to 10. Let's unlock it. Let's unlock it again. I press the table of 12, the 12 is here. And if I need to say this, like I need it, the 1 till 20, so multiple till 20. So I'll go with 20. So the table of 2, so this is going to be a result. It's showing the result. So it's starting from 1, 2, 3, 10, and after that I'm going to write it. So just need to change the final route. Now the second one was your repeat until. This is also known as post condition loop. Post condition, why? Because at the end, until we write the condition, right? It will start with repeat,
go with its statements, and inside those statements, at the end, you have a condition. That's why it is known as post condition. So post condition loop, as the name suggests, executes the statement within the loop at when the condition is encountered, it is evaluated. As long as the condition evaluates to false, the statement within the loop are executed. Again, when the condition evaluates true, the condition will go to the next statement after the loop. So after the loop, after true, it will exit the loop. When coding a post condition loop, we must ensure that there is a statement within the loop that will at least change the end condition to true, right? Remember input. So inside that input, if input is not changed or a variable value is not changed, so this condition is not going to get to true. So if it's not going to get to true, it's not going to terminate it, right? So a variable value needs to be changed for this criteria or condition. Otherwise, the loop will go forever. Infinite loop will be. So you have to hardcode terminate, or you have to disconnect the your executable file to stop it. Otherwise, the loop will execute forever. Now we have done the repeat until condition that this in pseudocode. First, you have to write repeat, then you have to write until. Inside that, all statements should be there, or it should be there. That needs to be repeated again. And if the condition is true, it will terminate. If the condition is false, it is going to back repeat and repeat. In Python, you don't have repeat until. But in VB, we use do loop until. So it is a post condition, right? So inside, we just have to write do and until. So that's not part of the syllabus. So Python, we don't use this. So these are like the other examples. So repeat, enter value. So mostly your validation check or this option check or pin check, right? Or if you want to continue. Options, continue, yes or no. Repeat until is the best option of a loop. Right? We are going to do some examples of it, so it will be more clear. In order to program efficiently, it is important to select the appropriate loop structure to efficiently solve the problem. For example, it is better to use a repeat until rather than while to end for validation check. We have done validation, right? So अब वैलिडेशन में हमें बार बार अगर एक चीज को चेक करना है इफ इट्स लाइक करेक्टर ऑफ नेम that should be more than 3 and less than 10 characters. So it's a validation check, right? So it is best to use a repeat until rather than while, right? So we are going to do a lot of exercises, then we'll see why it is important. The statement inside the loop must always be executed at least once. And there is no need for a second input statement. So there are loops only, it will directly go inside the loop and will execute the statement. There's no other statement needs to be done. So how it's going to work? Now this is your repeat until. See, अब repeat until में क्या हो रहा है, आपकी पूरी condition, पूरी execution एक दफा loop के अंदर जाएगी और loop के अंदर आपकी statement को execute करेगा. अगर वो condition true होगी तो वो टर्मिनेट कर देगा लूप को, और अगर इट्स कंडीशन इज फॉल्स, दिस क्राइटेरिया इज फॉल्स, दोबारा उसी लूप कंडीशन पे आएगा जहां से वो स्टार्ट किया था, रिपीट लिखा था, और एग्जीक्यूशन करेगा. और अगर हम वेरिएबल जो क्राइटेरिया है अगर वो चेंज नहीं करेंगे विद इन द लूप, वो इन्फिनिट चलता रहेगा. इट विल स्टार्ट इन्फिनिट लूप, जो भी कंडीशन थी वो चलती रहेगी. सो वी नीड टू चेंज दैट. अच्छा, नाउ देयर इज अनदर वन आपके लिए, फॉर यू. Let's do it. The first example we discuss. Enter mobile PIN. If it's correct, then give access. And after 3 attempts, it's going to deny. Right? Yes, sir. ठीक है? तो अगर हम उसको यूज करते हैं, तो let's input
enter pin. So this is your pin variable, and after pin, let's declare that is pin color integer, and start from here. Repeat inside repeat. This is your pin. Now you need another variable, that is a counter. Okay, 3 attempts हमने लेनी है, so you need a counter. So pin as also a counter, colon then integer, and initialize counter from 0. क्योंकि initialize होगा 0 से, ठीक है. So we need a variable counter. So say initially we have to put it to 0. So declaration, initialization, then repeat after input, then let's say if. So we need an if चाहिए, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. Yes sir. Like this. अगर हम if करेंगे तो एक्सेस ग्रांटेड और डिनाइड मिलेगा, अगर नहीं तो वो क्या करेगा, दोबारा इसमें लूप में चला जाएगा. तो ठीक है. So we need an so pin is it equal to 1 2 3 4, right? Is it equal to 3 1 2 then output access granted, else output access denied, and if. Now repeat, we have its until statement, and in until we need a condition. First condition क्या होगी? Is your pin equal to 1 2 3 4, or your counter is your counter equal to 3? अगर काउंटर 3 पे आ गया है तब भी से टर्मिनेट कर दे, और अगर पिन मेरा ओके है तब भी रूट को टर्मिनेट कर दे. ठीक है. अब काउंटर तो 0 है, इंक्रीमेंट भी तो मुझे करना पड़ेगा. तो एंड इफ के बाद इफ इट इज हियर काउंटर, तो लेट्स इंक्रीमेंट इट काउंटर +1. ठीक है. सो वी हैव टू राइट एन स्टेटमेंट कि हम काउंटर की वैल्यू 0 है. फर्स्ट टाइम अगर इनपुट आपके लूप में आए, इनपुट पिन किया, मैंने किया 4 5 6 7, it checked the if condition, this was incorrect, it showed me access denied, went to end if, और end if के बाद काउंटर उसने क्या कर दिया, your counter is become 1. अब एक दफा आपकी हो गया. सर हम इधर नेक्स्ट काउंटर क्यों नहीं कर सकते? वो 4 के लिए यूज होता है. जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज फॉर 4 टू नेक्स्ट. रिपीट में नहीं करते. रिपीट के लिए हम यहाँ पे हमें पूरा फॉर्मूला करना पड़ेगा. ठीक है. वो स्ट्रक्चर रिपीट अंटिल 4 टू नेक्स्ट है. अब रिपीट अंटिल में हम ये ऐसा कुछ नहीं करते. ये तो हम काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के लिए कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें एक अलग से वेरिएबल चाहिए जिसको हम काउंटिंग कर सकें कितनी दफा इनसाइड द लूप जा चुका है. ठीक है. Yes sir. Now it went to until this is false or this is also false. तो क्या हुआ, दोबारा लूप में रिपीट में आया. I entered the pin again. I entered 4 7 7 6. It again gave me access denied. Counter became 2. So again this false, again false, again back. Again give the code false. This is also false. It gave me a message denied, false. Now counter became 3 over here. This became true. Now false or true became the complete condition is true. Now what will your until do? Sir, it will terminate the code, terminate the loop. Right. That means your 3 attempts were done. So output a message 3 attempts done. Now this output message will be out of the until command. ठीक है. सो ये until के बाहर है. थोड़ा सा नीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए. सर लेकिन ऐसे अगर पासवर्ड भी हम 1 2 3 डालें फिर भी 3 अटेम्प्ट्स डन आएगा. Exactly. उसके लिए what we'll do, we'll put it in if condition. If counter is equal to 3,
then give me this message, है ना? यस सर, ओके। और एंड इफ, ठीक है, फिर वो मैसेज देगा आपको। अच्छा, रिपीट अंटिल के अंदर वी कैन ऑल्सो गो विथ फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशन भी कर सकते हैं, और वी कैन यूज रिपीट until as count control loop भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? अब हमने तो भी पढ़ा अभी तक कि दैट फॉर काउंट कंट्रोल वी यूज फॉर टू नेक्स्ट। रिपीट अंटिल के अंदर तो रिपीट और अंटिल और उसके बाद उसकी कंडीशन होती है, ठीक है? अब ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं? मैंने आपको फोर्थ इंग्रेडिएंट्स लूप स्ट्रक्चर के बताए थे। कोई भी लूप आप यूज करो, यू नीड 4 इंग्रेडिएंट्स फॉर इट, एंड व्हाट आर दीज? यू नीड अ वेरिएबल, योर इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड इंक्रीमेंटेशन। ऐसे ही है ना? यस सर। रिपीट अंटिल पे भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? लेट्स स्टार्ट विद रिपीट एंड अंटिल, ठीक है? और इसकी ये कंडीशन आएगी, मुझे आउटपुट मैसेज क्या करना है? आउटपुट कंप्यूटर साइंस, यही मैसेज था ना जो हमने 4 to next में भी किया था, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे मैं 4 to next का भी लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए। दैट वाज फॉर counter assign 1 to 10, and there was an output message, output computer science, and that was next counter, ठीक है? ये कोड था सिंपल, दिस वाज द कोड फॉर काउंट कंट्रोल। अब रिपीट अंटिल में कैसे करना है? हमें क्या चीजें चाहिए थी? 4 चीजें, वेरिएबल, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड इंक्रीमेंट। अब रिपीट अंटिल के स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है, सो हमें सारी चीजें मैन्युअली लेनी पड़ेंगी। वी नीड अ डिक्लेयर काउंटर कॉलन इंटीजर एंड असाइन काउंटर 1, हमें उसे असाइन करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे ही रिपीट में आएगा आउटपुट करेगा। अब वेरिएबल इज डन, इनिशियल वैल्यू इज डन, वेरिएबल इज डन, इनिशियल वैल्यू इज डन। आई नीड अ फाइनल वैल्यू। अब फाइनल वैल्यू मेरा अंटिल में कंडीशन में आएगा, क्या? काउंटर इज इट इक्वल टू 10, इज इट इक्वल टू 10, ठीक है? सो इनिशियल वैल्यू भी आ गई, फाइनल वैल्यू भी आ गई। नाउ इंक्रीमेंट, this increment. In for loop, we don't have to write the formula. The increment formula is what? Counter, counter plus 1. Here we have to write counter assign counter plus 1. अब यहाँ फॉर्मूला हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा फॉर इंक्रीमेंटेशन, करेक्ट? यस सर। अब यहाँ पे देखें, अगर हम स्टार्ट करें, डिक्लेयर हुआ, देयर इज अ वेरिएबल काउंटर, इनसाइड इट हैज 1 इन इट, और जैसे ही वो रिपीट पे आया इनसाइड लूप, वो एक दफा एटलीस्ट 1 इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द कंप्लीट कोड इनसाइड द लूप, करेगा ना? सो आउटपुट Yes, क्या sir. किया? कंप्यूटर साइंस एक दफा आउटपुट हो गया और इंक्रीमेंट कर दिया, दैट बिकेम 2, सो काउंटर वैल्यू बिकेम 2। नाउ इट वेंट टू अंटिल इज काउंटर इज इक्वल टू 10, काउंटर इज इक्वल टू 2, अभी तो 2 है। फॉल्स, इट वेंट टू रिपीट, और दोबारा ये मैसेज किया, फिर इंक्रीमेंट किया एंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जब आपका काउंटर 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9, 10, नहीं, दोबारा गया लूप में और यहाँ पे 10 हो जाएगा इंक्रीमेंट। जब 10 आया, 10 इज इक्वल टू 10, क्या हो गया? सर वो टर्मिनेट हो जाएगा लूप। टर्मिनेट हो जाएगा। क्या मेरी आउटपुट 10 टाइम्स हुई है? 1 से नहीं सर, लेके 9 टाइम्स, 9 9 टाइम्स टाइम्स। हुई है। सो व्हाट विल बी कंडीशन? इज इट ग्रेटर देन, इक्वल टू, और वी से कैन से ग्रेटर देन 10? फिर तो हो सकता है ना? सर अगर ग्रेटर देन, अगर हम कह दें क्योंकि हमने इक्वल्स टू फॉल्स 11। कंडीशन करनी है, सॉरी, सर मैं कह रहा था कि अगर हम कह दें इक्वल्स टू 11। वो भी दैट्स आल्सो करेक्ट।
We can say greater than 10, we can say greater than equal to 11, we can say equal to 11. ये सारी कंडीशंस हमारी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमें अगर लूप में जाना है और स्टेटमेंट नीड्स टू बी फॉल्स, फॉल्स होगी तो लूप में जाना है, सो हमें क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। करेक्ट? यस सर। नाउ दिस लूप कैन स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर मैं फॉर लूप 0 से स्टार्ट करूं, 10 टाइम्स करना है तो क्या करेंगे, 0 to 9। और ये अगर हम यहां से 0 से स्टार्ट करें तो फिर क्या होगा, इज इट इक्वल टू, मैं 10 भी कर सकता हूं, दैट कैन बी इक्वल टू 10, और इट कैन बी ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी दैट हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ग्रेटर देन ये 9 हो, so counter greater than 9, greater than equal to 10 or equal to 10. So these are the correct condition. So हमें 4 ingredients we have to use: variable, initial value, your final value and your incrementation. अगर मुझे decrement करना पड़े तो फिर क्या होगा, 10 से 11 पे आना है, so this will become, अगर मैं for loop में करता हूँ तो 10, this will become till 1, और मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, step -1 लिखना पड़ेगा in for loop. So count next counter, that means it is actually decrementing the formula. So अगर हमें यहाँ पे decrement करना है, so it is going from 10 to 1. So in for loop हम 10 से start करेंगे, 1 पे जाएंगे, but you have to write step -1. In repeat until आप initial value 10 दोगे, now 4 में automatically जब ये स्टेप -1 देते हो तो बैक एंड पे काउंटर साइन काउंटर -1 हो जाता है। यहाँ पे हमें मैनुअली फिर क्या करना पड़ेगा, काउंटर साइन काउंटर -1 देना पड़ेगा, और उसके बाद अनटिल आपको ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इट इक्वल टू 0, इज इट इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड इट इज ग्रेटर देन लेस देन 1, ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इज इट इक्वल टू 0, इज इट लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सो आपकी वैल्यू चेंज होगी, 10 है, इज इट लेस देन इक्वल टू 1, नहीं तो आपकी ये कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स हैं वो भी चेंज होता है। करेक्ट? यस सर। सो ये आपको याद रखना है, बिकॉज इन एग्जाम यू विल बी आस्क्ड टू रिप्लेस लूप स्ट्रक्चर फॉर अ फिक्स रेपिटेशन, और आपको काफी एल्गोरिथम्स ऐसे आ रहे होंगे जो फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशन है वो रिपीट अंटिल से यूज हो रही होंगी, या हम आगे करेंगे व्हाइल लूप करेंगे तो उससे यूज हो रहा होंगे। ठीक है, दिस असाइनमेंट इसको आपने कंप्लीट करना है यूजिंग 4 रिपीट अंटिल लूप, और ये 0 से एग्जिट करें, और यहाँ पे आपके जो आउटपुट है एंटर यूजर नेम पासवर्ड ये भी आपने चेंज करने, मेक चेंजेस टू योर एग्जिस्टिंग अकाउंट ये भी आपने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज करना होगा, चेंज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो जो प्रीवियस यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो चेंज हो सके। व्यू माई ऑर्डर और व्यू माई अकाउंट, ठीक है, वो भी आप कर दें। क्लोज माई अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि आपका एक्चुअल यूजर नेम और जो पासवर्ड है ना उसके अंदर क्या कर दे, एम्प्टी डाल दे, empty strings enter कर दें। So this is the assignment you have to complete properly again. यस सर। Okay, this assignment was for your repeat until, and so that was a previous assignment with case conditions. We have to select an option, or उसमें हम we have to go to the menu and further details. Now this involves repeat until, and in this you have started with repeat, and this is the menu output display, and we have to enter a selection. That's all fine. Then you have to go to case. In case condition, you are selecting any option 1, 2, 3, and it is H for help. Please contact this one for this good. And now over here, that if you press 0, that means exit. You don't have to write this. You have to output, say enter, right? And or yeah, you can say thank you for using. Otherwise,
Otherwise, you have to write over here output, then incorrect selection, right? So output is missing over here. And after that, so this is correct, this is correct. And for repeat, you have until its selection is equal to 0, then it's going to output it. So output is here, application closed. So you don't need this. This is going to come over here when you have pressed 0. So press 0, end program, and it's going to exit, right? So this is going to be go back to the loop for your menu. Got it? Yes, sir. Okay. The mistakes, right? So over here you have missed output. This you have to write output. This is not required here. This was required here. That's all. Now this is your repeat until. Now the third last loop is precondition loop, which is while, do, and while. This precondition is used first when we start with the while condition. It will check the while loop. It will check the condition first. Then we'll do the statements which needs to be repeated again and again. In repeat until, at the end, the loop, the condition was checked. But here, first the condition is going to be checked. Then it's going to go with the loop. Now, the precondition loops are the names just evaluate the condition before the statement within the loop are executed. The precondition loop will execute the statement within the loop as long as the condition evaluates true. Now, it's totally opposite of repeat until. Now, the condition is true, it will go inside the loop. If the condition is false, it's going to terminate the loop. Whereas in repeat until, it was totally opposite. Note that any variable using the condition must not be undefined when the loop structure is first encountered. So your variable or the criteria condition, the variable, whatever is being used, that needs to be defined. या आप इनपुट पहले ले रहे हो इनपुट वेरिएबल और फिर वो कंडीशन चेक कर रहे हैं या आपने कोई वेरिएबल लिया है और उसको असाइन कोई वैल्यू किया और वो फिर कंडीशन में के अकॉर्डिंगली चेक करे सो दैट नीड्स टू बी डन फिर वो लूप की कंडीशन को चेक करे. Now, when coding a precondition loop, you must ensure that there is a statement within the loop that will at some point change the value of the controlling condition. So, आपको जैसे repeat until में value change हो रही है तो यहाँ पे भी condition में variable की value change करनी पड़ेगी. Otherwise, वो भी same वही काम करेगा आपका infinite loop बन जाएगा. Now, in pseudocode precondition while loop कैसे use होता है? First we use while, then the condition, then do, and after do the statements or the statements, right? At the end, we use and while. So it will start with while, do, and while. That's why we, in pseudocode structure, we write while, do, and while. In Python, how are we going to use it? We will write first, we are going to write while, small letters, then the condition, and for do we are going to write in pseudocode we write in capital letter we write do, but in Python we are going to write right? Statement. So there is no end while statement. So at the end we don't write it. Okay. So after the loop जो भी statement होगी वो यहाँ से indentation से start होगी at the start of the line. So we just write while, condition, colon, and so on. VB we write do while, then condition, statement, and at the end we use loop. Okay, now there is an example. Same like the previous repeat until में हमने किया था. He assigned a value. So your statements says over here that a variable used in condition must not be undefined when the loop structure is first used. So here we have defined a variable and assigned a value that is an empty. And after that, we are checking the while condition. Is my variable is not equal to this? If it is not equal,
the condition becomes true, it will go inside the loop and execute this. If the condition is false, it will go to end while. So we have this comma away, right? So you have to input. This value is getting changed as an input. और अगर अब हम यहाँ पे input करते हैं, फिर check करते हैं कि क्या मेरी value n है या y है, ठीक है? So mostly when we are using continue program for y or n, ठीक है, or any found condition, if found is yes or no condition, इस तरह की जो जितनी conditions होती हैं उसके लिए फिर हम while loop या repeat until को भी यूज करते हैं. So Python में तो हमारे पास we don't have it or repeat until, but we have while loop. Let's try this in Python. ठीक है, so Python का एक कोड करते हैं, फिर हम थोड़ी सी और एग्जीक्यूशन करेंगे ताकि आपको प्रॉपर बाकी डिटेल्स में मिल जाए, इजी हो जाए. So let's take a variable answer and assign it empty. And why we can use this? So let me. Okay, is your answer is not equal to y, right? Then we don't write do, we're going to write column sign, enter answer as an input. So we are going to write enter y or n, right? So this is your complete statement. So save it. Just fine. Yes, and F5. So oh, in Python we don't use this. In Python, not equal is this sign, not equal, right? So enter y or n. If I press n again, because n is not required, वो नहीं होगा, capital N. और अगर हम small n करते हैं, so again अगर capital N करेंगे तो terminate, right? So let's show a message over here. Print. So print program, right? So after this loop, if my loop is terminated, we can check this. Okay, that was the code. Acha, selection is this is equal to 1. So selection में अगर आप assign कर देते हो, 1 कर दें. So it is a part of a string. So string के अंदर आप इसे assign कर दें empty, ठीक है? So while if it's not equal to, this is a string type, correct? वो सिलेक्शन को एज एन टीचर ले रहा था तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. सेव एंड F5. अब 0 प्रेस करो, प्रोग्राम एंड. करेक्ट? यस सर. प्रोग्राम एंड हो गया. सो यहाँ पे देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट दिस कोड, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग टाइप. जब आप स्ट्रिंग टाइप ले रहे हो, सो द कंपैरिजन इज ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप. सो यहाँ पे इन सिलेक्शन इज आल्सो टेकिंग अ स्ट्रिंग टाइप. But यहाँ पे जब हम ले रहे थे, it was equal to not equal to 0. That it was integer. So string or integer, it got conflict. There was a conflict, or that's why it did not showed you the termination of the loop. It went back inside the loop again and again. So it was an infinite loop. Correct? Yes, sir. Now, if I don't change this, मैं इसे चेंज ही नहीं करता, इसको मैं कमेंट, लेट्स पुट इट इन अ कमेंट. मैं वेरिएबल चेंज ही नहीं करता. मैं ये डिस्प्ले आए और डिस्प्ले होने के बाद जो भी है वो एग्जीक्यूशन करता रहे. द स्टेटमेंट वी हैव सेड दैट इट विल गो विद इनफिनिट लूप. इफ इट्स नॉट गोइंग टू गेट चेंज, लेट्स सेव दिस एंड रन. सी, infinite loop. It's not going to stop until we make it hardcore stop, like cancellation of it, the code. Right?
So it has ये become the ये infinite loop. ये इवेंचुअली आपके लैपटॉप को क्रैश कर देगा ना मेमोरी की वजह से? Not going to crash it, but it's not going to let you do halt the system. Just like not going to crash it, just halt your system. You have to forcefully close the application, हाँ ओके सर। right? So there is no cancellation of the वो आपके पास cancellation वहाँ पे ऊपर top पे नहीं आ रहा, फिर control और delete करके just go for control or delete task manager and then go for the close of the program and tasks of the that Python program. फिर वो आप कर सकते हो, otherwise वो आपका infinite loop चलता रहेगा, right? So this is mandated. This is also mandated. Now in while loop, we can also go for fixed number of repetitions, or you can say count control loop. We can also make it as a count control loop, alternative for of 4 to next. Remember 4 things we required for every loop structure. One was variable, initial value, ending value or final value, and the fourth one was increment, or you can say decrement. These 4 things are required for all. We have done this with 4 to next. We have done this with repeat until. Now, how to work with while to end while? Same 4 things. First, we need a variable. First thing, let's say counter, and counter is assigned a value 1. Second, you have to start with while. You have to go do the condition and do. Now, condition should be true to get inside the loop, and we have to write and while. Now, variable is here. This is the variable. Initial value is here. Now, final value. Let's do that again. The output message, which we have done with for and repeat until output computer science. We have to output computer science. How many times? 20 times. So computer science, and computer science 20 times after each other. So the final value will be what to make this condition true to get inside the loop. So your counter, is it less than 11 or equal to 10? So mostly we are going to use less than equal to 10. If it is 1, counter is 1, so it is going to check the loop. Counter is less than 1. 1 is less than equal to 10. It is true. It will go inside the loop, print, and go to end while and go back to the loop. Now, where is the increment? Did we change it? Now, over here, like repeat until, we have to write the increment statement. Counter assign counter plus 1. Right? So in for loop, so automatically it was in next void getting incremented, but in repeat until we have to do it manually statement, while we also have to write it a manual statement. Now it will go to 2, increment it. It is going to, it is less than equal to, then go back again. So this loop is going to continue till, this is going to be less than 20. So it will go back to again and again. If it is equal to 20, the condition is true. It will go inside the loop. Last time, increment it, it will become 11. So after, it will become 21. So it will check the condition again. So 21, is it less than equal to 20? No, it became false. So it's going to terminate the loop and go to end while, right? And after end while, it is going to go out of the loop. So with
repeat until, and while do and while, we can go with a fixed number of repetition too. For that, these four things are mandatory. So in exam, you will see these examples too. Okay. Now this is done. Now let's take few example that is to output a fixed number of iterations, or you can say repetitions. So both in same. So fixed number of repetition with while do and while. I told you, let's start with count. Count. A variable is here. Initial value is here. While count is less than 5. Then do what? This increment statement and while. So while, do, and while. And after that, if it becomes false, it's going to terminate and loop end. Right? So there is another example. You can see this example too, and you can also implement on Python and see the result. Now, for example, to check the value is between 0 to 10, our validation check. Right? So the value is from, or you can say this is a range check. So range is from 0 to 10. So enter a value, input it. After inputting a value, you will start with while loop and see value, is it less than 0 or value is greater than 10. So we have to make it true to make it repeat again and again. So it is less than 0, it is from 0 to 10. If it is less than 0, that means your value is -1, -2, and so on. Or greater than 10. So greater than means 11, 12, and so on. So this is not accepted. This is not accepted. If this is not accepted and your both conditions become true, then that means you have to enter the value again. If it is false, your value is in this range and it became false, the condition becomes false. So it is going to terminate. So you can work with range check too, even format check, length check, all conditions can be checked from while do and while. So there is another example. To check the value is between 0 and inclusive using Python. So in Python, you can use the statement. These codes are available, so you can check on that. Next, an example. A simple algorithm can be clearly documented using these statements. A more realistic algorithm to find an average of a number of integers input will include check that all the values input are whole numbers. So we have to check a value, whatever value you are getting inputting those values, are they whole number or not? So there must be whole numbers. So you have to write a validation check code. So अगर वो whole number नहीं है तो वो उसको आपसे दोबारा repeat करता रहे कि you need to enter a whole number, not a decimal number. And the number input to determine how many integers and input is also positive. Okay, this Sudoku is actually asking you to enter number, how many numbers you want to enter to take it as an average. So I want my program, so I need that to be enter 5 numbers. अगर मैंने 5 numbers enter करने हैं, 10 numbers मैंने enter करने हैं, और इनका मुझे average चाहिए, average result चाहिए, ठीक है? So this validation is check is actually checking the number which you are entering. Is it a whole number or not? अगर मैं कहता हूँ 5.5 numbers enter करने हैं, तो 5.5 numbers तो नहीं हो सकते ना? It can be only 5 numbers. आप 5 enter कर सकते हो या 6 number enter कर सकते हो. तो 6 नंबर एंटर करें और उनके नंबर से आप वैल्यूएट कर लें, एवरेज निकाल लें. सो दिस इज चेकिंग दिस. इज योर नंबर इज ग्रेटर देन 0? अगर आप एक नंबर की एवरेज निकालना है या 2 नंबर्स का निकालना है, सो दिस इज ट्रू. एंड your number, is it a whole number? So number is, if it is 5, sorry, is it 5? So 5 is in int, is it 5? So this is also 5. So 5 is equal to 5. So this is also true. So both are conditions are true, then it's going to terminate. Otherwise, if I enter, suppose I enter 5.5, मैंने entered here. So this is true and this is 5.5 and int is making it 5.
So 5.5 is equal to 5? No, it is false. So true and false is actually making the condition false. So if it is false, it will go back to the loop and will ask you to enter the value for an average again. कितने numbers चाहिए आपको? That's not relevant. ठीक है? Now suppose I have entered 5 numbers. मैंने enter ही 5 किए थे. So when entering a 5 number, so 5 is true, greater than, and so 5 is equal to 5. So 5 is equal to 5, int का 5, so 5 ही होगा. So this also becomes true. So true and true will become true condition. So that means you can enter 5 numbers. So this validation is actually checking your whole number. Now, it will go to this statement 4. I have to enter how many numbers? 5 numbers. So this is my number. How many are there? 5. So my loop to enter those number 5 numbers, so मुझे 5 times repetition चाहिए. 5 numbers करने तो 5 number मुझे बार-बार enter करने हैं. Got it? So this loop will start with 1 to number. Number has what value? 5. So counter assign 1 to 5. So 1 to 5 तक आपने loop चलाना है. ठीक है? Yes, sir. Now, inside this loop, first repeat until. This is also going to check the value, validation check. Is your value, is it a whole number? क्योंकि उसने कहा आपने whole number ही enter करना है. Is it a whole number? Again, your first value जो आपने enter कर दी. So enter an integer value. So value मैंने किया 3 and 3, is it 3? अगर 3 और 3 है तो it is 3, then it's true. आपका वो टोटल के अंदर टोटल प्लस वैल्यू कर देगा. नाउ दिस इज मींस टोटलिंग ऑफ अ टोटलिंग स्टेटमेंट. टोटलिंग स्टेटमेंट इज व्हाट? जो आप प्रीवियस टोटल वेरिएबल है उसके अंदर अ न्यू वैल्यू असाइन करोगे, और वो क्या है? जो आपने ये वैल्यू एंटर की है. जस्ट लाइक बिलिंग, जब आप एक प्रोडक्ट लेते हो फिर दूसरा प्रोडक्ट लेते हो, एट द एंड टोटल बिल बनता है. सो दिस इज व्हाट टोटलिंग इज डूइंग. प्रीवियस टोटल के अंदर न्यू वैल्यू असाइन करेगा. ठीक है? Yes, sir. Now after totaling it go to next, the counter will become 2, go back, it is not equal to 5, this is for second value. ठीक है? So first value enter की, second की, and this loop will go back again and again till how many values? जितने मेरे numbers I have entered. 5 values मैंने enter किया, तो 5 values enter करेगा, उन सबको add करेगा, add करके total variable के अंदर assign कर देगा. When total is done, your repeat for loop is completed according to the complete numbers. It will exit the loop, take its average. Average कितनी चाहिए मुझे? जो total है उसको divide करना है numbers. कितने numbers आप enter कर रहे हैं? So average will be calculated, right? So this is also you can work. Now you can also for loop के अंदर एक और काम भी कर सकते हैं. ये 1 की जगह आप variable भी use कर सकते हो. Let's take a minimum. Minimum is 1. So आप इसकी जगह minimum to number या minimum to maximum भी कर सकते हो. आप variable भी use कर सकते हो. ठीक है? So counter assign minimum to number और counter assign minimum to maximum. आप ऐसे भी लिख सकते हो. Values भी you can use and variables can be. So this is another example of it. So this is a Python code of it. You can use and execute it and check the result and see what happens. So remember, number, when you are entering this number variable in Python for loop, you are going to take it number plus 1. Why? To make it terminate, an extra value is required. Reason, when you exit this for next to in pseudocode, actually you have 5, enter the 5 maximum number, but when it terminates this, it make it to 6. तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 6 हो जाती है, फिर टर्मिनेट होता है. सेम विद पाइथन. पाइथन में भी फिर आपको एक्स्ट्रा एक वैल्यू करनी पड़ती है जो टर्मिनेट करे. सर तो फिर हम ये सूडोकोड में क्यों नहीं कर रहे नंबर प्लस 1? नंबर प्लस 1 सूडोकोड में इसलिए नहीं करें क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट कर रहा होता है. इट इज मेकिंग एन इंक्रीमेंट. मैंने यहाँ 5 किया था ना नंबर के अंदर 5, तो 1 to 5 तक चलना था. तो जब नेक्स्ट पे आएगा तो वो क्या होता है? इंक्रीमेंट करता है, तो 5 को वो क्या कर देगा? 6 कर देगा.
तो जब 6 होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा. Okay, sir. Right? Repetition using repeat until. So the problem to solve 10 numbers as input and output, the largest number, we need one further variable to store a counter. So that we know when we have compared 10 numbers. Now let's take 10 numbers, or 10 numbers में से we have to find out which is the largest number. Okay, so a bigger, we're going to take a variable that is biggest so far, next number and counter. So biggest so far is stores the biggest number, next number the number, like the next number to be input, and a counter variable stores how many numbers have been input so far, right? Input a number biggest so far, suppose I have entered 10, right? और मैंने कितने numbers करने हैं? 10 numbers enter करने हैं. From 10 numbers, I have to find the highest number or biggest number. ठीक है, मुझे ये find करना है. So जो first number मैंने enter किया वो क्या है? मैंने 10 enter किया. जब मैंने 10 enter किया, it used a repeat until, या 4 to next ले लें या repeat until ले लें, उसके लिए भी requirement वही आती है. ये आपका this is a variable initial value, this is the final value, and this is your increment statement जो loop के अंदर है. So repeat until what it do? आपने biggest number enter किया, अभी तक वो है. जैसे ही repeat में आया उसने आपका एक और number लिया, second number. Suppose मैंने किया 5, right? So counter became 2 क्योंकि that's a second number. This is your counter and this is your next number. और जो bigger variable है उसके अंदर अभी तक क्या पड़ा हुआ है? This, इसके अंदर 10 पड़ा हुआ है. अभी हमने next number में क्या किया? 5 एंट्री किया. If next number is it greater than biggest number, क्या ये next number, ये जो next number है क्या biggest number से बड़ा है? अगर बड़ा है तो biggest number में next number को क्या कर दो? Store करवा दो. But that is not bigger. So 10 में क्या रहेगा? It is going to skip and else. And if पे चला जाएगा. Okay. So counter will become now 3. Oh, sorry. It is 2. It will go back to the repeat until ask you to enter another number. Another number is post 20, and counter is, this is third. Counter became 3. So this is your counter variable. This is your counter variable next, and so on. Now it will go check this value. Is it next number is greater than bigger number? Next number, is it greater than bigger number? It is greater. So bigger number में अब आप क्या कर स्टोर कर दो? Next number. जो next number है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की जगह अब क्या हो जाएगा? 20 स्टोर हो जाएगा. So 10 is going to override by 20. And if counter go back to the loop क्योंकि it is not equal to 10, अभी तक मेरे counter जो है वो 10 नहीं हुआ. So next number इसी तरीके से आप 10 total 10 numbers आपने enter कर रहे हैं. When 10 numbers are done, उसमें से वो evaluate साथ-साथ it is going to swap it जो सा biggest number होगा. So at the end, biggest variable में you will have the biggest value and output the biggest value. Note that when we input the next number in the method, the previous number gets overwritten as it is no longer needed. So ये जो आपका जब आप overwrite कर देते हो ना, तो जो previous value है वो overwrite हो जाती है variable के अंदर, previous value नहीं रहती. Got it? Same you can do with the lowest value. अगर कहता है okay, you have to enter lowest 10 numbers and find the lowest. So variable name क्या हो जाएगा? Lowest so far, right? यहाँ पे क्या होगा? It will change with less than. Is it less than? Biggest so far. So अगर less than है तो फिर next number ये biggest. So this is lowest so far, lowest so far. So lowest number में आपका transfer हो जाएगा. Got it? So you can find the highest and lowest number too. Now try this in Python. Python में आपने try करना है.
and give me a pseudocode of complete lowest and highest. So you have to enter 10 numbers and give me the lowest नंबर आपने मुझे देना है उन 10 नंबर्स में से, और आपने मुझे हाईएस्ट नंबर देना है, ठीक है, उन 10 नंबर्स में से. गॉट इट? ओके सर. एंड those 10 numbers जो आप एंटर कर रहे हो, there is a validation check that is from 0 to 100. 0 to 100 आप नंबर एंटर इससे ज्यादा नहीं कर सकते. So you need to enter a validation check. यहाँ पे जो आप लगा रहे हो that needs to be validated. Validation check यहाँ पे भी लगेगा और validation check यहाँ पे भी लगेगा. अगर 2 validation check लगा रहे हो जरूरी है, एक ही No, होना sir. चाहिए. So do you Yes, sir. think repeat until is the best option, या मैं कोई और लूप भी यूज कर सकता हूँ उसके लिए? सर आप वाइल लूप. रिपीट अंटिल भी यूज कर सकता हूँ. अगर रिपीट अंटिल को मैं पहले ले आऊँ, यहाँ पे टॉप पे ले आऊँ, यहाँ पे रिपीट ले आऊँ टॉप पे, और उसके बाद इनपुट करूँ और फिर गो विद द कंडीशन, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ. फोर लूप मैं फिक्स नंबर है ना, फिक्स नंबर इज सेइंग 10 नंबर्स, 10 नंबर्स आपने फिक्स नंबर फोर लूप चलाना है, दैट्स आल्सो फाइन. ठीक है, तो ये भी हो सकता है, वो भी आप कर सकते हैं. ओके, रेपिटेशन यूजिंग 4 to next. अगर आप 4 to next से करते हो तो 4 to next की एग्जांपल भी is here. You can pause the video and see 4 to next की example using 4 to next. And this is repetition using a log value. So in this, a log value is a value used to terminate a sequence of numbers. So आपसे वो कहता है कि जी आपने नंबर एंटर करते जाना है जब तक आप 0 प्रेस ना कर दें, until you press a 0. 0 हो तो terminate कर दे, वरना otherwise it's going to ask you to enter the number again and again and again, जितने मर्जी नंबर एंटर हो जाए. ठीक है, so repeat until is going to break if the value, जो next value जो आप एंटर कर रहे हो is 0. अगर वो 0 है तो terminate कर दो, अदरवाइज वो वैल्यू एंटर करता रहे अगेन एंड अगेन, जितने भी नंबर्स होंगे उनमें से बेस नंबर फाइंड कर दे. सो यू कैन यूज दिस इज नोन एज अ रॉ वैल्यू. ठीक है, सो रॉ वैल्यू कैन बी यूज विद वाइल, एंड वाइल लूप भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, सो यू हैव मल्टीपल लूप्स ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो. इम्प्लीमेंटेशन द नंबर गेसिंग गेम. सो वी हैव डन गेसिंग नंबर इन इफ कंडीशन, हमने इफ कंडीशन में की थी, रिमेंबर. लेकिन इफ कंडीशन में ये बोला था यू हैव टू एंटर वन नंबर, एक नंबर एंटर किया फिर उसके बाद, ठीक है. लेकिन व्हाट्स गोइंग ऑन, आप रिपीट अंटिल यूज करते जाओगे जब तक गेस कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट? यस सर. ठीक है, सो यू हैव टू असाइनमेंट्स. फर्स्ट असाइनमेंट जो अभी मैंने बताया, हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, यू हैव टू फाइंड इट. सेकंड, गेसिंग गेम. So code is pseudocode is here, so उसका Python code आप use कर सकते हो. So there is a secret number random function, you can use that randomly from 1 to 10 आप numbers में, और random secret number enter कर दो. Guesses of number, guess कितने guesses हुए हैं? अभी तो कोई एक guess नहीं हुआ, 0 कर दें. Repeat until you can use guess if it is equal to secret. नहीं, अगर guess number equal to secret है तो बार बार loop में जाएगा. It will ask you to enter the number again and again. And guessing, अगर आपकी कितने आपने दफा एंटर किया नंबर, it is going to number of guesses आपके काउंट करता रहेगा. This is your counter for your guesses. Counter for guesses कि कितनी दफा आप guess कर चुके हो, 5 times guess कर चुके हो या 10 times guess चुके हो. This is that. Now this if condition is greater than secret is going to give you a message your number is smaller, right? And if it is less than this, your number is greater. So 1 to 10, 10 numbers 1 to 10 तक की आप कोई नंबर लें, random number function use करके, and ask for a secret number. So these are two assignments you have to do. ओके सर. ठीक है, so there are other examples too, you can study that. So इतना मैं डिटेल में अब नहीं जाऊंगा, it's a short time. ठीक है, so this is for same example. ठीक है, सो दिस इज फॉर रनिंग टोटल है, आपने टोटल फाइंड करना है तो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, यूजिंग नेस्टेड इफ.
So you can also use nested if loops. Inside a loop, you can enter another loop. Suppose let's have a table, or is table ke I have 3 columns. These are 3, column 1, column 2, and column 3. And I have 4 rows, row 1, row 2, row 3, and row 4, right? Enter number of rows, enter number of columns. So I have 4 rows and 3 columns. And input symbol, आपने इसमें symbol करना है. Suppose मैंने symbol इनमें @ enter करना है या कोई और symbol enter करना है, कोई भी करना है. 4 to next, this 4 to next is for your row. ठीक है, आपका रो 1 से नंबर ऑफ रोज तक चलेगा. रो 1, रो 2, रो 3, and रो 4. And inside this, you have another nested if. Inside that, you have another for loop that is for column counter 1 to number of columns. So this column counter is number of counter कितने हैं मेरे पास? 3. Okay. So output row counter and column counter. Row counter is अभी मेरे पास क्या है? जो first है, तो अभी मेरे पास 1 चल रहा है. कॉलम काउंटर क्या है? अभी भी 1 चल रहा है. एंड सिंबल क्या है? @ है. ठीक है. सो आउटपुट क्या होगा? यू आर गोइंग टू आउटपुट दिस. यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा. नाउ दिस नेक्स्ट is going to execute until my whole columns are completed. 3 columns, right? अभी मेरा रो कॉलम काउंटर क्या होगा? वो 1 ही रहेगा, लेकिन कॉलम काउंटर अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होके क्या हो गया? 2 हो गया. लूप में गया और लूप में आके अभी नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज नहीं हुआ. रो इज 1, दिस इज रो 1, दिस इज रो 1, एंड कॉलम काउंटर क्या? अभी 2 है, तो यहाँ पे कॉलम काउंटर 2 में आके आप सिंपल एंटर कर दो. गो टू नेक्स्ट कॉलम काउंटर. अब ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. सो 3, तो 3 पे आ गया. दिस इज कॉलम. रो क्या है? रो 1 ही है और 1 3 में. नाउ दिस लूप इज गोइंग टू टर्मिनेट, क्योंकि मेरे 3 पूरे हो गए यहाँ पे. सॉरी, ये 3 कॉलम्स मेरे पूरे हो गए. ठीक है. सो दिस लूप इज गोइंग टू टर्मिनेट. जब ये टर्मिनेट होगा, आपका ये नेक्स्ट लाइन आउटपुट एक नेक्स्ट लाइन किया है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ गया. दिस कोड मीन्स दैट आप नेक्स्ट लाइन पे अब आ गए. अब नेक्स्ट काउंटर क्या हो गया? रो काउंटर. अब ये क्या था? रो काउंटर भी मेरा 1 चल रहा था, अब ये 2 हो गया. अब मेरा रो 2 पे आ गया और दोबारा रिपीट किया. अब रिपीट के अंदर दोबारा नेस्टेड इफ को इसको कंप्लीट चलाएगा. कितने? 1 से कहाँ तक? 3 तक. सो 1 2 3. When this is going to exit, again next will become 3. तो अब वो 3 पे रो आ जाएगा. 3 का फिर ये नेस्टेड कॉलम चलेगा. नेस्टेड 4 inside column 1, column 2, and column. Right? Same, the last will become 4, and the 4 will run this outer loop, and this inner loop will work with column 3. 3 times चलेगा और इसके बाद this is going to terminate. ठीक है. तो मोस्टली हम जो नेस्टेड 4 यूज करते हैं वो डिफरेंट यूज के लिए भी हो सकते हैं. Which loop structure to use? If you know how many times around the loop you need to go when the program executes, gets to the loop statement, use a count control loop. If the termination of the loop depends on some condition determined by what happens when the loop, then use a conditional loop. Conditional is your repeat or while. A precondition loop has the added benefit that the loop may not be entered at all if the condition does not require it. That's all for now. Enjoy learning. Like, subscribe, share. Allah Hafiz.